Let us see the next question. Calculate, highlight the portion, cost of equity from the following data using, highlight the portion for the realized yield approach. तो वापस कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. ईयर 1 2 3 4 5 5 साल का इंफॉर्मेशन दे रखा है. डिविडेंड पर शेयर इज गिवन एंड प्राइस पर शेयर, highlight the portion at the beginning is given. So beginning of year 1, beginning of year 2, beginning of year 3 and so on information is given to us. I request all of you to go through the question please. I am asking a question to all of you from the given information. Question में हमको ऐसा दे रखा है that what is the price of the security at the beginning of every year. फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग और फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग. दूसरा हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हर साल में डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ. जैसे कि पहले साल में डिविडेंड 1 रुपए का, दूसरे साल में डिविडेंड वापस 1 रुपए का, तीसरे साल में 1 रुपी 20 पैसे. लाइक दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन. नाउ एकदम गौर से सुनो. मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, आई वांट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. लेट्स से इफ एट ऑल somebody is purchasing the security at the beginning of year 1 and he is selling security at the end of first year, तो उनका रिटर्न क्या होगा? That is my question. I repeat my question. Somebody purchasing the security at the beginning of year 1, holding the security for 1 year and he is selling the security at the end of first year, तो उनका रिटर्न क्या होगा? Let us understand that how to make the calculation of the return of the first year. देखो, कोई इन्वेस्टर ने ईयर 1 के बिगिनिंग में सिक्योरिटी खरीदा, तो उसने कितने में खरीदा? 9 रुपए में. उसको क्या मिला? 1 रुपए का डिविडेंड मिला और उसने सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बेच दिया, तो क्या मिलेगा? 1 रुपी प्लस 9 रुपी 75 पैसे माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100. यानी क्या होगा? 75 पैसे का चेंज इन द प्राइस का रिटर्न प्लस 1 रुपए का डिविडेंड यानी 1 रुपी 75 पैसे डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? उनको फर्स्ट ईयर में 19.44% का रिटर्न मिला, ऐसा हम लोग समझते हैं. मेरा क्वेश्चन है वापस सबसे, that somebody purchasing the security at the beginning of year 2 and again holding it for 1 year, तो उसका रिटर्न क्या होगा? Put answer for this in the chat box. तो फ्रेंड्स सेकेंड ईयर का रिटर्न कैसे होगा? We have to understand like this. Somebody purchasing the security at the beginning of year 2 is purchasing at 9.75. उनको क्या मिला? 1 रुपए का डिविडेंड. उनको क्या मिला? 11 रुपी 50 पैसे माइनस 9.75. इतना चेंज इन द प्राइस का एडवांटेज मिला डिवाइडेड बाय 9 रुपी 75 पैसे इंटू 100. This is where the return is supposed to be found. 11.5 minus 9.75. That is 1 rupee 75 paise plus 1. 2 rupee 75 paise upon 9 rupee 75 paise. Into 100 for getting answer in percentage term. That comes to 28.21%. It means that say we understand something like this, that beginning of year 2 means end of year 1 price is 9.75. Beginning of year 3 means end of year 2 price is 11.5. This is 11 and this is 10.6. So friends, we have the sufficient information to compute the return from end of year 1 to end of year 4. We don't have the sufficient information to compute the return of the fifth year. This is what we understand. Now, let us have understanding, let's say, how to make the calculation of the cost of equity over here using the realized yield approach. यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयरली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसा करके ईयरली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वी विल मेक द कंप्यूटेशन ऑफ रियलाइज्ड यील्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन किया जाएगा.
So please write an answer for the question. Working note number 1. Calculation of return to investor from end of year 1 to end of year 4. Column number 1 will be year, column number 2 will be return, एंड थर्ड कॉलम दैट इज कॉलम में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट ईयर का रिटर्न जैसे हमने समझा विल हैव द फॉर्मूला लाइक दिस, इट इज d1 plus p1 minus p0 divided by p0 into 100. तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि डिविडेंड इनकम है 9 रुपए, आई एम सॉरी डिविडेंड इनकम है 1 रुपया, तो 1 रुपये का डिविडेंड मिला एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस 9.75 minus 9 whole divided by 9 into 100. This is the way we find the return for the first year. That is 19.44%. सेकेंड ईयर उसमें डिविडेंड कितना है, वापस 1 रुपए है. ना फ्रेंड्स सेकेंड ईयर के कैलकुलेशन के लिए सेकेंड ईयर का प्राइस P0 हो जाएगा, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग का प्राइस P0 हो जाएगा और सेकेंड ईयर का एंड का प्राइस P1 हो जाएगा. तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, द P1 विल बी 11 रुपीज 50 पैसे और P0 कितना हो जाएगा, P0 विल बी 9 रुपीज 75 पैसे होल डिवाइडेड बाय 9 रुपीज 75 पैसे. कैसे सोचने का, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में किसी ने सिक्योरिटी खरीदा और उन्होंने सेकेंड ईयर के एंड में बेच दिया तो उनको रिटर्न क्या मिला. थर्ड ईयर का डिविडेंड है 1 रुपी 20 पैसे. थर्ड ईयर के एंड का प्राइस यानी कि फोर्थ ईयर के बिगिनिंग का प्राइस 11 रुपीज माइनस थर्ड ईयर के एंड का दैट इज थर्ड ईयर के बिगिनिंग का प्राइस 11 रुपी 50 पैसे whole divided by 11 रुपी 50 पैसे into 100 for getting answer in percentage term. फोर्थ ईयर उसमें क्या होगा, डिविडेंड का इनकम होगा 1 रुपी 25 पैसे प्लस ईयर एंड का प्राइस है 10.6, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्राइस है 11 डिवाइडेड बाय 11 into 100 for getting answer in percentage term. सबसे पहले ऐसा रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1 टू एंड ऑफ ईयर 4. उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी रियलाइज यील्ड कैसे कैलकुलेट करने का वो मैं आपको समझाता हूं. राइट ऑन आंसर दिस मच. फॉर द सेकेंड ईयर 11.5 minus 9.75, so 1 रुपी 75 पैसे प्लस 1, 2 रुपी 75 पैसे अपॉन 9.75 into 100, so 28.21%. Third year 11 minus 11.5, so there is a reduction in the price by 50 paise plus 1.2 divided by 11.5 into 100, 6.09. Friends, logically we understand that this return can be positive also and this return can be negative also. Negative कौन सा सिचुएशन होगा, जब प्राइस रिडक्शन इज मोर देन द डिविडेंड इनकम. 10.6 minus 11 plus 1 rupee 25 paise upon 11 into 100, 7.73%. This is the way the return is calculated from end of year 1 to end of year 4. Now the next calculation importantly starts. Calculation of realized yield
to an investor, comma, for holding investment for 4 years. फ्रेंड्स 5 साल का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। देखो कैसे समझने का, एक इन्वेस्टर ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था आज से 4 साल के पहले, सो दैट 1 रुपी विल बिकम 1.1944 at the end of the first year. दूसरे साल he is getting return of 28.21%. So into 1.2821, now that 1 rupee will grow at the rate of 6.09. So into 1.0609 into that is growing to by 7.73%. Yes, ये जो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया था आज, वो 4 साल में इतना हो गया। सो व्हाट इज द रेट एट विच यू आर गेटिंग रिटर्न, उसको हमको एनुअलाइज्ड में कन्वर्ट करना है। सो इट इज 1 + k raised to 4. दिस इज द वे द k is calculated. So 1 + k is equal to 1.1944 into 1.2821 into 1.0609 into 1.0773. So it is 1.7502. ये रेस टू 4 है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका 4th रूट हो जाएगा, रेस टू 1/4. So cost of equity will be found as 1.7502, उसका 2 टाइम अंडर रूट किया जाएगा, and the answer is 1.1502 minus 1. ये पॉजिटिव 1 से सामने जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा. So 0.1502, that is 15.02%. ऐसा करके हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है. So this is the way we compute the annualized return. तो जो भी इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है, that is cost of equity. This is what we understand. Right on answer. Return to investor is 15.02%, comma. So cost of equity is 15.02%. ऐसा हम लोग बोलेंगे. तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही कैलकुलेशन है यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट सी जो 5th ईयर का डिविडेंड इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑफ नो यूज टू अस, क्योंकि 5th ईयर का एंड का प्राइस ही दे रखा है. और अगर 5 साल होते, 5 साल का रिटर्न, then in that case we understand we are required to make the calculation of the cost of equity using trial and error method.